Good evening, everyone. In this session, I welcome all of you in this August gathering. And as the title of this session says, Making of Music, Close Encounter, it basically reminds you of Star Trek movies, the series of Star Trek where Even things Spielberg movies. suddenly pop up in front of you, high tech fun and all that. So the thing is that I don't intend zapping any one of you with the technical jargons and all that. I am into audio engineering, apart from singing and playing. So the whole idea was that once in a while I must share certain technical stuff without going into the jargons, etc., in order to make you aware as to what exactly goes into making music. When we say making music, it basically encompasses so many things: playing various instruments, putting them together in a system called a digital audio workstation. Just please hold on. हेलो. हाँ, अभिषेक. बिहार में इस वक्त मेरा प्रोफेशनल सेशन चल रहा है. मैंने रिक्वेस्ट किया था आपसे कि 4:30 तक करो. मैं बाद में आपसे बात करता हूँ. बाय बाय. I'm so sorry. That was an unexpected call. So, what goes into making music as such is there are various building blocks which are used. And in my home studio, I'm using something known as Nuendo. It's a German software. In fact, it's a complete suite. Software is not the correct word for that. And in this suite, it starts right from planning, recording, editing, then post production. You can say in the management jargon that this is a kind of a project management for the music production. But then everything depends upon the user. User is just not the audio engineer. User has to have knowledge about music. Sometimes in a studio we see that there is a glass window which is separating the singers and the performers from the control room. In the control room there is an engineer who is sitting on the mixer console, and he's controlling everything, recording, and then he's monitoring with the headphone. He also has a microphone with which he is conveying in the other room. Otherwise, both these rooms are hermetically sealed. No air or no sound can pass through either way. लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इन अ होम स्टूडियो लाइक दिस which I have created, it is not a proper studio as such, because in a studio you have the acoustic parameters where the walls around you are acoustically controlled. They have the ability to absorb unnecessary noises and all that. वो सारी चीजें नहीं है. But I'm using the basic building blocks to make the thing happen. So in today's session, I'm going to tell you a very, very basic thing. I'll take an example of a song which I had recorded recently. I keep doing a lot of research on retro music by way of remaking, not exactly remixing. Remixing is sin as far as I'm concerned, but remaking of music by actually playing each and every instrument, on track by track, and then syncing them together, and then doing all those things. Very interesting for someone who has never seen this. I'll just give you an example. I'll play a small piece of track, and thereafter I'll sing the song. I'm sure all of you can see a colorful kind of a screen in front of you, in which there are a number of horizontal bars
This software suite is called Nuendo, which is meant for recording. Recording is done on these separate tracks. Like on the top track, I have the basic rhythm. Then on the second track, I am playing ensemble. That means number of violins being played together. On the third track, I am playing cello, which is a bigger version of violins, which produce a low kind of tone. Then on next track, I am playing oboe. It is a blowing instrument. The one, two, three, four. The fifth track is VOX. Vox stands for basically voice channel, in which I have recorded my voice, which presently I have muted. And then, of course, the last track is a piano track, which I added later on to give certain flavor of jazz riffs. I'm just playing this track in front of you. It is of interest. You just listen to this. मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। चले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ जो एक बेवफा पे, क्यों मुझे प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंस जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। Now this track has got number of instruments जो कि इसमें बज रहे हैं, और मैंने इसमें लाइव आपको गा के सुना दिया, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंटरैक्टिव सेशन। अदरवाइज जो कुछ मैंने गाया है वो ये वॉइस वाले ट्रैक पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने रिकॉर्ड किया इसको पहले, इसको आप एक बार सुनिए। पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के।
चले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का, इसमें म्यूजिक कंपोजर, साउंड रिकॉर्डिस्ट और म्यूजिक अरेंजिंग, ये सारा काम मैं खुद अकेला करता हूँ। तो मुझे फ़ायदा इसमें ये रहता है कि मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, बजाय इसके कि मैं किसी पे डिपेंड करूँ कि मैं पहले बनाऊँ और फिर उसको मटेरियलाइज करने के लिए कोई दूसरा इंसान वहाँ पर हो। सो अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अभी क्या है कि सारे ट्रैक्स एक साथ बज रहे थे। आप इसको चीज को तब आप अप्रिशिएट करेंगे जब आप इंडिविजुअल ट्रैक के छोटे छोटे पोर्शन सुनेंगे, देन यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि ये इंस्ट्रूमेंट इंडिविजुअली कैसा बज रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टॉप ट्रैक है, सबसे टॉप ट्रैक जो कि बेसिक रिदम एंड बैकग्राउंड, जिसको कि हम कहते हैं कि इट सेट्स द टाइमिंग, जो भी 1 2 3 4 जो टाइम चल रहा है और उसका एक यानी नींव है उसकी एक तरीके से। आई जस्ट प्ले दिस। सो मैं इसको एज अ सोलो ट्रैक बजाता हूँ, आप जरा सुनिए। इस ट्रैक के अंदर म्यूजिक की लैंग्वेज में हम जिसको बोलते हैं कॉर्ड्स, बैकग्राउंड कॉर्ड्स, पैड्स और लिटिल बिट ऑफ हारमोनी, ये चीज़ बज रही है जो कि सिंगर को मदद करती है कि वो उन्हीं सुरों के बीच में रह के the singer can sing easily because there is a background beat which is going on along with the requisite chords. To enrich this entire thing, we add something known as ensemble, which I have shown here as ENS. Say this, when I add this. A number of violins being played together, जो कि आप स्टेज पर भी कभी कभी देखते हैं. All these things are being created by my keyboard, which I'm actually playing. Now, in music, what happens? You enjoy music. It's a very very kind of a subjective thing. You enjoy music because there is a whole range of frequencies which is soothing to your ears. But that range is very wide. It has got low frequencies and it has got high frequencies. It has got mid frequencies. So we have to do justice with these frequencies. Therefore, we add another instrument which is known as cello, 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 a bigger form of violin. इसकी मैं आवाज सुनाता हूं आपको. This particular instrument is kept on the floor because it's big, and then it is bowed. So I have shown you the basic building block, that is the rhythm and the chords. On top of that, we have a layering of ensemble, high-pitched violins, then cello, which is in the mid-range. So, gradually it is enriching. In the song, we also have got intermediate pieces which are known as interludes. So in the interlude, I have used an instrument called oboe, which is basically, a blowing instrument. Oboe looks like a clarinet,
but it's a very very different instrument. You get to see oboe only in very very few philharmonic orchestra. Otherwise, you don't get to see oboe instrument. You can always Google and see how it looks like. So the music which I'm playing in the middle, I've used oboe because I like the sound of it. I could have used flute also, or I could have used harmonica, but I simply, because oboe is very very a very very romantic instrument. So I'm using oboe basically to play interlude. Here it goes. This is the sound of oboe. Oboe, because of its typical high pitched sound, it is not only used in interlude music, but also used as a solo instrument or playing pieces here and there, which I have used in my song extensively. So now when I play all these instruments together, we have the chords, ensemble, cello, oboe. मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। Now you see, when I'm adding these instruments, uh, it is becoming richer and richer, and that's how it sounds so soothing to your ears. एंड इसमें जो सबसे लास्ट में जो मैं ऐड किया है बाद में, दैट वाज पियानो, विच आई एम प्लेइंग फ्री फॉर्मेट में. आई एम नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर रूल फॉर दिस बिकॉज आई एम अ जैज म्यूजिशियन. सो वट एवर कम्स टू माई माइंड आई जस्ट प्ले इट. सो आप इसका भी थोड़ा सा आनंद उठाएं कि पियानो इसमें कैसे बजाए. You can hear the sound of piano distinctly.
You see, this entire process of recording is very tedious. This song, the reprised version of the song which I've sung, that means I've just sung half the song. वैसे तो ये song लंबा है, but I've just taken a small portion of this song and then I've recorded in my own voice. And my whole idea is that this song by itself is complete. Although I'm singing the reprised version, just one paragraph and one main line. लेकिन इस सॉन्ग को जब हम गा रहे हैं तो उसमें अपने इंडिविजुअल ट्रैक्स को आपने सुना, इन सब ट्रैक्स को उसके बाद मैंने कंबाइन किया एंड देयर आफ्टर द कंप्लीट साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड देन आई सेव इट इन अ सूटेबल फॉर्मेट. I want to do it in MP3 format or I just want to retain the waveform. ये जितने भी इसमें आप देख रहे हैं, these wavy things, they are known as wave files. They are very heavy, in terms of file size, they go into several megabytes. That is not desirable when we are putting the entire content on internet. Let's say YouTube. I've got my own YouTube channel. I'm sure most of you must have seen that, VD Singh 8. That is the name of my YouTube channel. VD Singh 8. 8 is my lucky figure. So I kept it. So whenever I make music, I basically convert them into MP3 format, and then the entire thing gets conveyed. तो इस तरीके से इसको हम करते हैं. And I hope I was able to show the screen. Somebody will give me a feedback if you're able to see the screen. सवाल था जी बताइए. आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ जी किया है जी अली साहब. और इंशाल्लाह आप और करेंगे, जी मगर डू नॉट लेट दिस आर्ट जी गो अवे विथ यू. जी बिल्कुल सही कहा. हाँ, ये विरासत है, औरों को भी सिखाइए, दीजिए. हाँ जी 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 बेशक, और शेयर कीजिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रेना ही पे शेयर कीजिए, मगर एक कुछ इंस्टीट्यूट तो खोलिए कम से कम. हम लोग इतनी जानकारी मिली है जी जी और मतलब खुशी हुई है कि भाई ऐसे ऐसे हम तो सुनते थे तानपुरा है, तबला है, ये है, जी मगर अब सब चीज इलेक्ट्रॉनिक इतना अच्छा हो गया है कि भाई देख के अचंभा हो जाता है, आदमी बिल्कुल चकित हो जाता है. मगर ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश जी है अली साहब. कि ये सर, ये जो कला है ये आप पास ऑन कीजिए. जी जरूर जरूर जरूर. मैं और पता नहीं राजीव भैया सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, मगर मैं तो सीखने को तैयार हूँ. सो स्वीट ऑफ यू. और असल में सिखाने का मजा भी तभी आएगा जब आप लोग जो दूसरे साइड बैठे हुए हैं इंटरेस्ट लेंगे, और आपने इंटरेस्ट लिया भी, और आपने, बिकॉज ये जो क्यूरियोसिटी होगी सीखने की, जी. तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ बताऊंगा. हाँ. और मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है इस फील्ड के अंदर, ना तो म्यूजिक में है हाँ. और ना ही इसकी इंजीनियरिंग में है. मतलब मैंने तो कॉलेज वाली इंजीनियरिंग सीखी हुई. आई वाज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर बिफोर आई अरे जॉइंड वाह, आर्मी. अरे वाह. हाँ. तो मैं जो जहाँ तक म्यूजिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ अपने शौक के रहते मैंने इसको स्टूडियोज में जा जा के देखा और ख़ुद सीखा मैंने. वैसे इसके जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो एक तो FTII है जो कि पुणे में है, जी जी. उसके अलावा चेन्नई में है, उसके अलावा AR रहमान इंस्टीट्यूट है, जो रहमान साहब बहुत फेमस म्यूज़िक कंपोज़र हैं और गायक भी हैं. बल्कि वो तो मल्टी फैसेटेड हैं, वो हर चीज़ कर लेते हैं वो खुद ब खुद. की भी एकेडमी चलती है. इसी तरीके से जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे इनका बाकायदा कोर्स चलता है. तो बट हम में सभी लोग इतने लकी नहीं होते ना कि जिनको उसमें एक्सेस मिल जाए. बहुत दूर है और वो हमारे काम के साथ जो है अड़चन डालेगा, हम नहीं कर पाएंगे. तो ये देखते हुए मैं जीना वर्ल्ड का एक मेंबर होने के नाते मैं इतना ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं छोटे छोटे यानी टिप्स, क्योंकि लेसन तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है एंड इट टेक्स इयर्स बेसिकली. लेकिन एक यानी एक आसानी से हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, मेरा आइडिया वो रहेगा. इसलिए मैं चलती हुई ज़ुबान में मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसी इसमें टेक्निकल जार्गन्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो बैठे हुए हैं जी.
आप लोगों के जहन में ये चीज आनी चाहिए कि भाई ये इन्होंने बताया कर्नल साहब ने, तो इस तरीके से होता है। उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि पहली बात तो मैं बता दूं, आप में से हर एक इंसान अपने घर में एक होम स्टूडियो बना सकता है। अच्छा हम आगे आने वाले जो इस किस्म के हाफ एन आवर के जो एपिसोड्स होंगे, उसमें हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल। मैं भी एक साधारण सा मिडिल क्लास आदमी हूँ कि और स्टूडियो के ऊपर पैसा खर्च इतना कर नहीं सकता हूँ। तो बट आई एम बेसिकली परस्यूइंग माई पैशन। म्यूजिक इज माई पैशन। तो आप में से जिन लोगों का भी पैशन है, म्यूजिक है या बोलना या वॉइस ओवर करना या कुछ करना, तो बहुत ही यानी इकोनॉमिकल वे में सस्ता, सुंदर और टिकाऊ जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए यू कैन सेट अप योर ओन होम स्टूडियो विद रीजनेबली गुड वॉइस क्वालिटी। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करेंगे आगे आने वाले 2-4 जो इस किस्म के एपिसोड्स होंगे। लेकिन मेरा जो एग्जांपल है वो तो म्यूज़िक के साथ ही रहता है, बिकॉज म्यूज़िक के अलावा जो मैं वॉइस ओवर करता हूँ उसमें भी यही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ मैं। कई ढेर सारे वॉइस ओवर टाइप के किए हैं जो कि आप लोग सुनते रहते होंगे। जीना वर्ल्ड के लिए जो स्लाइड शोज होते हैं, पीछे से मेरी आवाज़ आती रहती है। जी जी सो वो सारी चीज़ें मैं इसी के ऊपर करता हूँ और वो बहुत आसानी से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ऑडियो इंजीनियरिंग एक मामूली बात नहीं है, बात बहुत अहम बात है। जी जी हाँ, जी, और बहुत हर एक आदमी नहीं कर सकता है ये, इसमें सही। पेशेंस और वो चाहिए, जी, कहते हैं टेनासिटी। टेनासिटी, पेशेंस, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो हर एक इंसान में थोड़ी बहुत एक सेंस ऑफ म्यूजिक होना चाहिए, यानी मेलोडी को पहचानना थोड़ा सा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके जरिए आप कोई म्यूजिक की शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन म्यूजिक हर चीज़ का एक अहम अंग बन जाता है। चाहे मैं वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ तो एक हल्का सा पीछे म्यूजिक चलता रहता है। ये सब इसलिए होती है बिकॉज ये आपको बांध के रखता है, आपने देखा होगा। एक चीज और बांध के रखती है, जी अली साहब। मोहब्बत। जी जी, बहुत सही कहा। वो तो मेन सबसे बड़ा कहते हैं ना ग्लू, वो तो मेन ग्लू है। हाँ, उसके बिना नहीं चलता। नहीं चल सकता, आप सही कह रहे हैं।